guys, it's Riya here and welcome back to my channel Beauty and the Code। आज की वीडियो में मैं आपके साथ परफ्यूम एम्प्टीज शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे परफ्यूम्स मैंने इस पॉलिथीन में डाल रखे हैं, सब कुछ ख़त्म कर चुकी हूँ। इसमें परफ्यूम्स मिस सब कुछ कंबाइंड है। बाय द वे, अगर आपको नहीं पता कि परफ्यूम एम्प्टीज या प्रोडक्ट एम्प्टीज क्या होता है, आई हैव बेसिकली फिनिश्ड ऑल द परफ्यूम्स दैट आई एम शोइंग यू टुडे एंड मैं आपको एम्प्टी बॉटल्स दिखाने वाली हूँ एंड आई एम गोइंग टू टेल यू वेदर दिस वॉज वर्थ द मनी और नॉट एंड वेदर आई विल बी रीपर्चेसिंग these perfumes or saying bye bye to it. So it's like a buy versus bye bye concept. So it's very interesting. मैं बहुत जल्दी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज शेयर करती हूँ एंड देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो इसी तरीके का वीडियो ये होने वाला है दैट यू फाइंड इट enjoyable एंड फन। सो लेट्स बिगिन। बिफोर वी डू सो, मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, यू हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। So the first perfume that I can grab is Fuji Green Tea from the Body Shop. Now I think they have stopped making this fragrance in the first place, and this was one of the best perfumes from the TBS. So refreshing. It was like a green tea. It was like a green tea mixed with citruses. Such a fresh summer vibe. This was one of my favorite fragrances out there. I'm not sure if they are still continuing to kind of make this fragrance, but मुझे इसकी जगह एलिजाबेथ आर्डन का ग्रीन टी फिर से ख़रीदना है बिकॉज दैट रिमाइंड्स मी ऑफ द टाइम इन माई लाइफ विच इज़ वेरी फन एंड हैप्पी and one of my besties had actually gifted me that. His name is Joe. So instead of getting this as a repurchase, I will go and purchase the Elizabeth Arden green tea fragrance because I think that fragrance grew on me, so I want to get that one. Next one is a fragrance mist from Women's Secret. This is called as Love is in the Air. Now this was a very light kind of like a gulabari rosy fragrance with hints of freshness to it. थोड़ा सा शुगरी फील था, थोड़ा सा इंसेंसी था एंड इसमें रोज था, तो काइंड ऑफ लाइक थोड़ा सा रोजी फ्रेशी अगरबत्ती की तरह लगता था। नाउ दिस इज द काइंड ऑफ DNA विच आई जस्ट गो थ्रू लाइक वाटर, not something that I'm particularly interested in repurchasing, so I'm not going to repurchase this one. Then I have Wrapped in Sugar from Bath and Body Works. This was a kind of like a sugar syrupy fragrance with some hint of florals in this. एंड थोड़ा सा इसमें स्पाइसीनेस था। वो स्पाइसीनेस डिड नॉट सिट वेल विथ मी समहाउ। मुझे बाद में थोड़ा सा कड़वा सा लगने लग गया था, तो आई जस्ट वांटेड टू फिनिश दिस एंड गेट ओवर विथ इट। बट जब इसको लेयरिंग में मैं यूज़ कर रही थी तब ये मुझे बहुत पसंद आ रहा था। मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम इसको लेयरिंग में ही लगा के यूज़ किया है एंड आई डोंट थिंक आई वांट टू रीपर्चेज दिस वन। हालांकि लेयरिंग में बहुत अच्छा चला ये, बट ऑन इट्स ओन इट डजंट रियली वर्क वेल फॉर मी, सो आई एम नॉट गोइंग टू रीपर्चेज इट. Next one is one of my favorites from perfumesteal.com, and this one is Hypnotic Poison from Dior. This is such a intoxicating sweet fragrance which has a lot of dark energy to it. I love this fragrance and मेरे पास ऐसा परफ्यूम, प्लैटिनम परफ्यूम, इन सब का अभी हिप्नोटिक डियोर का रखा हुआ है ड्यूप, सो आई डोंट रियली नीड टू रीपर्चेज दिस वन बिकॉज वो दोनों भी इससे बहुत सिमिलर हैं. सो just because I already have a backup, I'm not repurchasing this one. जब वो भी खत्म हो जाएगा ना, I'm definitely going to buy myself that bottle. Next is a fog fragrance. This is called as Make My Day. Now this is one of a very gorgeous spicy floral fragrances which, despite looking pink, is a very unisex fragrance, and this is something that the spices overtake the fragrance. It's very kind of like a clovey fragrance जिसमें क्लोव का एक तीखापन बहुत तेज़ आता है. इसमें पेपर और क्लोव दोनों का तीखापन बहुत तेज़ आता है. प्रॉपर स्पाइसी फ्रेग्रेंस है ये वाली. एंड दिस आई इन्जॉयड यूजिंग दिस वन, बट मुझे ऐसा नहीं लगा कि वाओ दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू गेट अगेन. जैसे जैसे ये ख़त्म होने लग गया वैसे वैसे मुझे रिलीफ मिलने लग गया कि चलो ये ख़त्म हो रहा है एंड इट्स गोइंग फॉर गुड. तो वो वाला फीलिंग आ गया. दैट मीन्स आई डोंट वांट टू रीपर्चेस इट, बट ओवरऑल इट वाज अ नाइस स्पाइसी फ्रेग्रेंस. माय नेक्स्ट परफ्यूम इज फ्रॉम अजमल एंड ये मैंने अपने थोड़े डिफरेंट रोजी फ्रेग्रेंसेज में इसको मेंशन किया था. ये एक इंसेंसी रोज फ्रेग्रेंस है जो बहुत ड्राई पॉटपोरी की तरह फील होता है. हाँ, ये बहुत ही ड्राई रोज़ फ्रेग्रेंस है एंड बहुत मैच्योर है. बहुत वुडी रोज़ था ये. इसमें इंसेंस बहुत ज़्यादा था. काफ़ी हद तक एक अगरबत्ती की याद दिलाता है मुझे ये वाला. सो ये वाला भी जब फिनिश हुआ तो आई वाज लाइक ओके नाउ टाइम टू से बाय टू दिस फ्रेग्रेंस. इट्स नॉट समथिंग कि ओ नो ये फिनिश हो गया और मुझे फिर से खरीदना है. बहुत अच्छा रोज़ वेरिएंट है ये, बट आई जस्ट गॉट बोर्ड ऑफ इट एंड आई हैव सो मेनी न्यू फ्रेग्रेंसेज इन माई कलेक्शन विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज़ एंड फिनिश, सो आई एम नॉट गोइंग टू रीपर्चेज दिस वन.
Next perfume is a Zara perfume called as Forget Me Not, and I'm not really sure if this is still available in Zara, so no point in saying whether I'll repurchase it or not. But this was a very delicate feminine fragrance which was very floral, very fresh and very sweet at the same time. I absolutely loved this fragrance and how it was. बहुत ही माइल्ड लगता था ये, ऐसा लगता था कि कितना सॉफ्ट फ्रेग्रेंस है, लेकिन जब इसको मैं लगाती थी एंड लगाने के बाद जब मैं ऑफिस जाती थी और थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करती थी, पीपल यूज टू आस्क मी वॉट आई एम वेयरिंग। तो मुझे समझ में आया कि ये मुझे उतना प्रोजेक्टिव नहीं लग रहा, बट लगाने के बाद दूसरों को आ रहा है। तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस था, बट नो पॉइंट इन डिस्कसिंग फर्दर बिकॉज आई थिंक दिस इज डिसकंटिन्यूड। Another discontinued fragrance which had my heart, this one was from Niche Perfumes and this is called as Oud Cinnamon. This is the one that my husband wears and he used to love this one. I had gifted this one to him. He absolutely enjoyed this one, and after I told him that this is discontinued, he literally was heartbroken and he felt कि ये स्टॉक आउट होने के पहले मुझे 2-3 बॉटल्स खरीद के रख लेनी चाहिए थी. He was that disappointed and this was just amazing on him. Like nobody could pull off Oud Cinnamon the way he could. I am very sad that this is no more available and I'll probably keep this bottle just for the memory's sake because this was his favorite fragrance और इसमें अभी भी थोड़ा बहुत fragrance मुझे आ पा रहा है. So if I can find something similar to Oud Cinnamon, or if you guys know something similar to Oud Cinnamon from Niche Perfumes, do let me know. I am looking for a similar scent profile. My next perfume is Vintage Musk and this one is from Mariage Ajmal. Now ये वाला ना मुझे थोड़ा बहुत मस्क सफ़ी फ्रॉम नसीम परफ्यूम्स की याद दिलाता है, थोड़ा बहुत. ये थोड़ा ज़्यादा वाइट मस्क की है और वो वाला थोड़ा ज़्यादा बैलेंस्ड है. तो मुझे इसके कंपैरिजन में नसीम फ्रेग्रेंसेस का मस्क सफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है. उसकी सेंट प्रोफाइल ज़्यादा मैच्योर है, ज़्यादा ब्यूटीफुल है और थोड़ी ज़्यादा यूनिसेक्स है. ये वाला थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट हो रहा था फिनिश करना, तो ये वाला मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया था एंड आई आस्क्ड हिम टू फिनिश इट. मैंने इसको थोड़ा फिनिश किया एंड देन आई जस्ट हैंडेड इट ओवर टू हिम. सो आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू रीपर्चेसिंग दिस वन. मुझे वाइट मस्क में मस्क सफ़ी फ्रॉम नसीम परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा पसंद है. नेक्स्ट परफ्यूम इज़ फ्रॉम एकम परफ्यूम्स. आई थिंक दिस इज़ कॉल्ड एज एलिना क्योंकि इसका रब हो चुका है मार्क, तो कुछ पता ही नहीं चल रहा स्टिकर पे कि क्या लिखा हुआ है. मैं अंदाजे से एलिना बोल रही हूँ, आई एम नॉट रियली श्योर. दिस वॉज अ वेरी green foresty woody woody sort of a fragrance which is super mature and this was a typical unisex fragrance according to me. and ये भी मैंने थोड़े दिन तक enjoy किया, उसके बाद मैं इस प्रोफाइल से बोर हो गई and I just wanted to get something better for myself. Just to get this to finishing line, I was layering this with jasmine based fragrance, especially नायका का अमोर. मैं उसके साथ इसको पेयर अप कर रही थी क्योंकि दोनों की सेंट प्रोफाइल आपस में काफ़ी अच्छे से लेयर हो रही थी एंड इट वाज अ गुड कॉम्बिनेशन टू वेयर. तो उस तरीके से मैंने लेयर कर करके इसको फिनिश किया. आई एम डेफिनेटली नॉट गोइंग टू रिपर्चेज दिस. Next is Tahiti Pink Lily and Bamboo from Bath and Body Works. This was a very fresh fragrance with that very nazuk delicate fragrance of very delicate florals and थोड़ा सा bamboo sap का greenness था इसमें. ये एक काफ़ी water down fragrance मुझे लगता था. कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं फ्लेवर्ड वाटर स्प्रे कर रही हूँ अपने ऊपर. जितना हल्का गुलाबरी सा होता है ना उतना हल्का लगा ये मुझे. इट वॉज सुपर सुपर काइंड ऑफ लाइक नॉन एग्जिस्टेंट ऑन मी. सो आई एम डेफिनेटली नॉट गोइंग टू रीपर्चेज दिस वन. एंड मैंने ये थोड़ा मुश्किल से ख़त्म किया है बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बस पानी छिड़क रही हूँ खुद पे. So the next one is called as Moonlight Path from Bath and Body Works. Now ये I don't think currently available है Bath and Body Works पे and I wish that it was क्योंकि I have been thoroughly enjoying this one. ये literally feel होता है जैसे बोरो प्लस एंटीसेप्टिक क्रीम रहती है ना, बिल्कुल वैसा फ्रेग्रेंस है. थोड़ा वाइट फ्लोरल, इट गिव्स द वाइट फील, थोड़ा सा हर्बल नोट्स थे इसमें एंड ओवरऑल काफ़ी एक हीलिंग जैसा एक थोड़ा हीलिंग जैसा फील होता था. तो मुझे ये वाला फ्रेग्रेंस बहुत पसंद आया. I think this is something that if Bath and Body Works brings it back, मैं इसको repurchase करना चाहती हूँ. Next is from Fog Pure Lady and this is Blooming Rose. I think this is also a discontinued fragrance from Fog because many people are looking for this and I'm not able to find them anywhere and I'm not able to share the links for it. This was such a delicate and a very kind of like a rosy rose which had like थोड़ा सा फ्रेशनेस, थोड़ा सा स्वीटनेस. बहुत प्यारा रोज़ फ्रेग्रेंस था ये एंड आई एम सैड दैट आई हैव रन आउट ऑफ इट. बट आई न्यू दैट आई एम नॉट गोइंग टू गेट अ बैकअप ऑफ दिस वन.
so no point in just keeping it and hoarding it. So I just wanted to use it up and free up the space for new perfumes. So आप ऑलरेडी मेरे वीडियोस देख रहे हो, मैं इतने हॉल्स करती हूँ, इतने नए परफ्यूम्स आते हैं हर महीने, एटलीस्ट 5 से 6 नए परफ्यूम्स मेरे कलेक्शन में ऐड होते हैं. सो इट्स ओनली फेयर फॉर मी टू काइंड ऑफ लाइक रिमूव द वंस दैट आई एम यूजिंग लेस. सो इसीलिए मैं ये एक्सरसाइज काफ़ी रेगुलरली करती हूँ. And last perfume in this product Empties, Perfume Empties edition is from Secret Temptation. This one is called as Romance. This is my 6th or 7th or 10th bottle. I don't even remember how many bottles I have literally emptied for this one. This is a very jasmine orange blossom dominating fragrance. It's a very sharp white floral which is hard to miss. ये एक ऐसा सेंट प्रोफाइल है जो बहुत लाउड है, बहुत स्क्रीची है, बहुत नोन डीएनए है. एंड इंडिया में हर दूसरे बंदे को ये फ्रेग्रेंस का फ्रेग्रेंस का फील पता है. लाइक मेरे ऑफिस में वन ऑफ माई कॉलीग्स यूज टू वेयर दिस वन, और जैसे ही वो मेरे पास आके मुझसे बात करती थी, आई वाज लाइक ओके, सीक्रेट टेम्पटेशन कम्स. सो दिस वाज दैट कॉमन, दिस इज दिस कॉमन. एंड अब मुझे इस सेंट प्रोफाइल से थोड़ा सा बोर्डम हो गया है. हालांकि आई ऑलरेडी हैव अ बैकअप, मेरे पास ये अभी भी है. तो मैं उसको भी फिनिश करूँगी और उसके बाद मैं रीपर्चेस नहीं करूँगी. एंड प्रॉबली दोबारा प्रोडक्ट एम्प्टीज में शायद ना दिखाऊँ, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू आई डोंट वांट टू डू सो मेनी रेपिटेशंस. बट दिस इज़ थ्रू एंड थ्रू यूज्ड अब्यूज्ड फ्रेग्रेंस विच इज़ सुपर इनएक्सपेंसिव. एंड इंडिया में ये बहुत ईजीली अवेलेबल है, very long lasting for the pricing and just amazing in performance. So that brings us to the end of the video. That completes my product Empties. I hope कि आपको ये mini review पसंद आया होगा and you got an idea whether I will be repurchasing these fragrances or not. Based on that, you can expect what you will not see on my channel going forward. Like, these fragrances will not make their appearance now. So that's it for today's video. I hope that you liked it. If you did, hit the like button, subscribe, hit the bell notification, follow me on Instagram, and I'm gonna see you very soon in my next video. Bye.